Good morning, students. Today we are going to start the new topic. As yesterday we have gone through with the equity share and the feature and merit demerits. So today we are going to start the new PowerPoint. It is preferential share. So let's start. The chapter is sources of business finance. So today we are going to start the preferential share to learn about preferential share. Preferential share. What are these? प्रेफरेंशियल क्या होता है? तो बेटा प्रेफरेंशियल वो शेयर्स होते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में जिनको इक्विटी शेयर से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी। पहले जो इक्विटी शेयर्स वाले जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी बजाय प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को पे किया जाता है। दैट इज़ द प्रेफरेंशियल शेयर। दैट इज़ द ओनली डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। है क्या बोल रहे हैं? देखो, प्रेफरेंशियल शेयर आर दो शेयर विच गेट द प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट टू payment of dividend and the repayment of investment amount during the winding up, right? So there are some features of preferential shares. To understand more, what are the features? Features are, first is fixed rate of dividend. क्या बोल रहे हैं? It's fixed rate of डिविडेंड। कि प्रेफरेंशियल शेयर में क्या होता है? देयर इज द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। मीन्स डजेंट मैटर द कंपनी इज फेसिंग द लॉस और कंपनी इज हैविंग द प्रॉफिट, द डिविडेंड, द शेयर ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। अगर मैं किसी कंपनी की प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हूँ और मेरा डिविडेंड सपोज 16% का है, तो डजेंट मैटर कि कंपनी को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, मेरे को मेरा 16% का डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट का। नेक्स्ट होता है नो सिक्योरिटी। देयर इज नो सिक्योरिटी। क्या बोल रहे हैं? देखो, कंपनी डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रेफरेंशियल शेयर। कि जो भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको किसी भी तरीके की कोई भी सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से नहीं दी जाती है। सपोज XYZ कोई कंपनी है और वो अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स जो है वो ऑफ़र कर रही है मार्केट के अंदर, तो सपोज मैं उनके प्रेफरेंशियल शेयर आई एम गोइंग टू परचेज, तो वो मुझे किसी भी तरीके की कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखेंगे। विदाउट एनी सिक्योरिटी आई विल बाय द प्रेफरेंशियल शेयर्स, राइट? आफ्टर दैट, वोटिंग राइट्स। voting right. As we know that equity shareholders have the voting right in any decision making related to the company, but to the preferential shareholders there is no any voting right for the decision related to anything in a company. कंपनी के अंदर कुछ भी हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैव नो राइट्स टू इंटरफेयर ऑन दैट, राइट? After that, hybrid security. Hybrid security, what is that? It is very important and very important term, hybrid security. What is hybrid security? It is term, actually होता क्या है कि preferential share has the some features of equity share and some features of debenture. So it is called hybrid security. देखो किस तरीके से preferential share are called hybrid security as these share have features of equity share as well as the debentures. Like equity share, preferential share get the dividend only when the company earning the profit. कि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उनको उनका शेयर मिलता है। एंड द डिबेंचर, प्रेफरेंशियल शेयर गेट अ फिक्स रेट। और डिबेंचर जैसे एक फिक्स रेट का डिविडेंड लेते हैं, वैसे प्रेफरेंशियल शेयर भी हमेशा फिक्स रेट का ही डिविडेंड लेते हैं। इसलिए द प्रेफरेंशियल शेयर हैव द फीचर्स ऑफ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सो इट इज कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटी, राइट?
Now, the most important topic of the chapter is the types of preferential share. और ये इतना important है that I am assuring you that you are going to have one question related to the types of preferential share in your final examination. Okay, तो अब इसको हम करते हैं. Types of preference share. Types of preference share. What kind of types of preferential shares are there? There are number of kind of preferential share. First है आपका commutative preferential share. क्या बोल रहे हैं? It's commutative preferential share. Cumulative preferential share. तो cumulative preferential share क्या होते हैं? देखो, cumulative preferential shares वो shares होते हैं जिन preferential shares का जो dividend होता है it is accumulated. For example, I am a preferential shareholder of XYZ company, but this year the XYZ company is suffering with loss. So this year I will not get the dividend, right? Next year again the company is facing the loss. Next year I will again I'm not going to have the dividend. But after the 1-2 years, after 2 years, company is having profit. Company को बहुत अच्छा खासा profit हुआ है. So on the year of profit, I will get the dividend of all these 3 years. Means जैसे suppose मैंने 2020 का मुझे dividend नहीं मिला, 2021 का मुझे dividend नहीं मिला because company is facing the loss. But 2022 there is a huge profit, is the surplus, company is having surplus, then I will get the dividend of all these 3 years, 2020, 21 and 23. It means the dividend is accumulated. क्यों जमा हो रहा था मेरा, भले कंपनी ने लॉस फेस किया है इसलिए उस टाइम उन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया है, बट at the last year when the company is having all the surplus and profit, on that time I will get all the profit and all the dividend of all these losing years, right? Next, non cumulative preferential share. Non-cumulative preferential share, simple, it is just opposite of cumulative preferential share. Means जैसे in cumulative preferential share we can get all the dividend on all losing years, but in non-cumulative preferential share we will not get the dividend of those year in which your company has faced द लॉसेस. जिस ईयर में कंपनी ने लॉस फेस किया है उस साल का किसी भी तरीके के डिविडेंड को पे नहीं किया जाएगा. ओनली द कंपनी विल पे द डिविडेंड ऑफ द ईयर इन विच द कंपनी हैविंग सरप्लस और प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर कौन से होते हैं? Participating preferential share are the share in which the shareholder participate in the business activities. Means they interfere in the decision of business or company or any activity. Means the preferential share which get the share in the surplus profit of the company are known as the participating. Means ये कौन से preferential share है? ये वो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं जिनमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस जब कंपनी को सरप्लस होता है तो सरप्लस में से भी इनको डिविडेंड मिलते हैं. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एक प्रेफरेंशियल शेयर कौन से होते हैं? जिनका एक फिक्स अमाउंट में ही जिनको
डिविडेंड मिलते हैं. बट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर आर दोज प्रेफरेंशियल शेयर विच गेट द डिविडेंड इन सरप्लस ऑल्सो, कि कभी अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में से भी इनको डिविडेंड मिलेगा. दे आर पार्टिसिपेटिंग. नेक्स्ट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर. ये कौन से प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग आर दोज प्रेफरेंशियल शेयर इन विच द शेयर होल्डर विल नॉट गेट एनी डिविडेंड और एनी yes share from the surplus. Only what they get only is the fixed amount of their dividend, जो उनका है 10%, 13%, whatever. Doesn't matter, the company is getting the surplus of 50%, even the 50%, even on the 50% of surplus they will not get any dividend from the surplus. They will get only the fixed amount of dividend which they have. Okay, now redeemable preferential shares. Redeemable preferential shares. Redeemable preferential shares कौन से होते हैं? The preferential share which are redeemed, redeemed का मतलब होता है pay back after expiry of the fixed period of time is known as redeemable. वो preferential shares जो उनके expiry date के बाद भी जिनको पे किया जा सकता है, पे बैक किया जा सकता है, आर द redeemable preferential shares. Right? Now the next is irredeemable. Irredeemable preferential shares कौन से हैं? These are those preferential shares which cannot be redeemed after expiry date. कि अगर कंपनी की जो शेयर्स की जो एक्सपायरी डेट है वो अगर एक बारी निकल जाती है, then the preferential shareholder will not get the dividend because it is irredeemable. Right? Now next is convertible and non-convertible. Convertible. Preferential share and non-convertible. Convertible preferential share and non-convertible. Convertible preferential shares are those shares which can be converted into equity shares, जिनको हम equity shares में convert कर सकते हैं. And non-convertible preferential share are those shares which we cannot convert into equity share. So that is all for today. Tomorrow we will discuss the advantage and merits and demerits of the preferential share. Till then you revise all this. It is very important and try to make your own notes and take care.